हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल शिवानीज वर्ल्ड में। आई एम शिवानी। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो लेट मी टेल यू, हियर आई टॉक्ड अबाउट होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन एंड DIYs। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशंस। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 4 ऐसे सिंपल DIYs। दे कॉस्ट यू नथिंग बिकॉज द बेस मटेरियल इज़ फ्री एंड दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक, क्योंकि आप इसमें अपने बच्चों को आराम से इन्वॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर दे विल डेफिनेटली एंजॉय विद यू। और बहुत आसान है इनको बनाना, और अगर आप बना भी रहे हैं तो आपको घर पे ही सारे आइटम्स मिल जाएंगे, तो व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई ऑल दीज DIYs विद योर किड्स एज वेल। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। लेट्स बिगिन दिस। सो इन माई फर्स्ट DIY वी नीड कोकोनट शेल, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक प्लांटर लेना है जिस पे हम ये कोकोनट शेल को पेस्ट करेंगे, और ये प्लांटर पुराना है तो इसको कलर करने के लिए मैं एक एक्रेलिक ब्लैक कलर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस प्लांटर को ब्लैक कलर से कवर कर दिया है, और लास्ट में एक मेरे को रोप चाहिए जिससे इसको थोड़ा सा और हम डेकोरेट करेंगे। So in my this DIY to make an artistic candle holder, we need one glass jar, चाहे वो आपके सेट का कोई पुराना पीस बचा हो या क्रैक्ड हो। We need broken twigs और glue gun to fix it. So now moving to our next DIY. In this we need one sturdy branch to bear some weight, unused glass jar और एक cotton macrame का पूरा रोल लेना है। और अगर आपके पास रोल नहीं है तो you can use ऊन ऑल्सो। आप ऊन ले सकते हो, डिफरेंट कलर्स की ले सकते हो, सेम कलर की ले सकते हो। यहाँ मैंने अलग अलग साइज़ की थ्रेड ली है, और अब मैंने उस स्टर्डी ब्रांच में इन थ्रेड्स को लगाना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रांचेस में मैंने ऑलरेडी वार्निश कर रखा है। अगर आपको कोई भी ब्रांच लेनी है विदाउट वार्निश भी बहुत अच्छा लगेगा।
सो नाउ मूविंग टू DIY 4. यहाँ मैंने लिया है एक टिश्यू रोल, 1 स्ट्रेटनर, दिस बॉक्स टू मेक सर्कल्स, हाइलाइटर और बीटरूट लिया है फॉर कलरिंग एंड अगेन सम ट्विक्स. So I hope you all really like this video. If yes, then please do not forget to subscribe to my channel and please give it a try to all these DIYs. They are very simple and easy to make. Thank you so much. Thanks for watching. Take care. Bye bye.